Bismillahir Rahmanir Rahim. Today I am going to discuss a very important topic in Islamic banking and finance as well as in conventional banking and finance. The comparison of balance sheets between conventional banks and Islamic banks. That actually what is the difference between these two banking systems? Usually we see in the society the people, whether they are laymen or the people who are working in Islamic banks or they're working in conventional bank, they seems to say that there is no difference between Islamic and the conventional banks. The opponents of Islamic banks also says say that there is no difference between these two systems. It is a replica of conventional banking. तो कोई फर्क नहीं है, कान को इधर से नहीं इधर से पकड़ने वाली बात है, ये सिर्फ रेप्लिका है, दोनों के दरमियान किसी तरह का कोई फर्क नहीं है, तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम होती हैं. So today in this session we will try to explain that whether whether there is any difference between these two systems. So that is why today I have selected their financial statements of financial positions, balance sheet, to explain that what is the difference between, where is the difference between these two systems. Look at here, deposits. You know that each bank, whether that is Islamic bank or the conventional bank, they generate their asset side from their liability side. And from their liability side, the important element is the deposits. Actually, the people used to come to the banks and they open their deposits. And from that deposits, Islamic banks generate asset in their asset side. As you know that balance sheet and two sides, there are two sides of balance sheets, asset side and the liability side, and deposits is the liability side. So what is the explanation of deposits? You want to see my another video where I have discussed the deposit management and discussed the deposits. What is the basis of deposits? On what basis the deposits are opened in Islamic and the conventional banks? But here, briefly, I say that all types of loan, current account, saving account, investment accounts are opened in conventional banks on loan based. When we say on loan based, it means that there is creditor debtor relationship between depositor and the conventional bank. When depositor come into the conventional bank and they open loan, they open current account or saving account, it means that they are lending their deposit to the conventional bank. So in these deposits, conventional banks are debtor and the depositor, or they are actually creditors. So when they are creditors, so it means they are not allowed by Sharia to charge any interest. So when they do, if they will charge any profit, that profit will be considered interest, because any additional amount received on any debt or the loan is known as interest. तो वो सूद बन जाता है चूंकि कर्जे के ऊपर profit है. On the other hand, in Islamic bank side, you see that there are current accounts, saving account, and investment accounts. Current accounts are loan based, and other two accounts are mudaraba based, where deposits are rabbul mal, and Islamic banks are mudarib. So they are managers. So that is why here profit, it is permissible for depositors to earn profit because they bear risk. So, and it is also mentioned in the form of, you can say, the documents of the saving accounts. When तो ये मेंशन होता है जब वो सेविंग अकाउंट खोलने के लिए जिस फॉर्म के ऊपर दस्तखत करता है क्लाइंट, वो ये बकायदा एक्सेप्ट करता है कि वो इसके ऊपर रिस्क बियर करेगा जो वो डिपॉजिट जमा करा रहा है. ओके, लेट्स सी टू द deposit balance sheet side.
Here you see this is the financial statement position, statement of financial position balance sheet. Here, I'm not going to talk about all items. I am taking just these three items: lending to financial institutions, investment, advances. These three, these three assets are generated from deposit sides. They use deposit to generate these assets. It means that lending to financial institutions, if this bank is Bank Al Habib, a conventional bank. So any bank, HBL, UBL, any bank that can be. So they actually lend other financial institutions, other banks, other financial institutions. They lend them on against some reward. If they will get any reward, any remuneration on lending, it will be considered interest, सूद होगा। जो कि किसी दूसरे इदारों को कर्जा देंगे, तो जो इदारों को कर्जा देंगे उसके ऊपर जो भी इजाफी रकम चार्ज करेंगे वो तो सूद ही कहलाएगा। सो वेरी सिंपल, इट इज इंटरेस्ट। Okay, investment and advance. Now the question is, where do they invest? कन्वेंशनल बैंक्स ये कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? और एडवांसेस याद रखें, इन्वेस्टमेंट इनकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है बैंकों की, एंड एडवांसेस से मुराद होता है जो वो क्लाइंट को फाइनेंस करते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंसिंग जो होती है वो एडवांसेस के तहत आती है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनकी इन्वेस्टमेंट की हेडिंग के तहत आती है। अब चल के हम ये नोट्स में देखेंगे कि number 7, 8, 9. These notes will further explain that what is the lending, investments, and advances. So look at here the lending to the financial institution. So it says that lending to the financial, that the detail of it is that Bay Muajjal receivable from the State Bank of Pakistan, securities held as collateral against uh, amounts due from financial institutions, GOP Ijara Sukuk. So GOP Ijara Sukuk carry rates because GOP Ijara Sukuk are the Islamic Sukuk, so it is permissible. So we have no objection upon conventional banks that why they are investing in GOP Ijara Sukuk, but when they invest, they charge any rent, any remuneration on the securities, other securities and other things. These are known as interest because they are earning, they are earning on lending, क्योंकि वो lending के ऊपर earn कर रहे हैं। Okay, number 8, investment, federal government securities and shares. Further, this is the explanation that they have invested in these securities. Let's check that what are these. Okay, federal government securities में they are investing in market treasury bills, T-bills, interest based. Pakistan investment bonds interest based, foreign currency bond investment interest based, term finance certificate in interest based. ये सूदी डॉक्यूमेंट्स हैं। इन सूदी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है सूद कमाते हैं। इंश्योरेंस इज प्रोहिबिटेड, हराम है। स्टॉक मार्केट के अंदर वो इन इंश्योरेंस के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो सूदी बैंक हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर किस कंपनी के शेयर परचेज करेंगे वो इस बात का ख्याल ही नहीं रखते कि ये हलाल बिजनेस है, हराम बिजनेस है। उनको सिर्फ और सिर्फ जो गर्ज है वो इस बात से है कि दे जस्ट वांट टू अर्न प्रॉफिट, सो दैट इज व्हाई दे जस्ट invest into the shares of the company which is profitable, irrespective that whether it is halal or haram. तो हलाल और हराम का ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये है उनकी। Now this is the advances, financing. Look at here, bills discount haram, and loan haram, credits, running finance, all of these are the interest based products. तो ये सूद के तहत क्लाइंट्स को फाइनेंस किया जाता है। तो इनकी जो फाइनेंसिंग है वो भी सूद पर मबनी है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जनाब कन्वेंशनल बैंक के अंदर तो सारा निजाम ही सूदी है। सो होल कन्वेंशनल सेक्टर इज बेसिंग अपॉन द इंटरेस्ट। Now, this is Mizan Islamic Bank finance statement. Same, those three elements we have selected from the conventional bank. We are selecting here from Islamic Bank. So let's check that due from financial institutions, investments, and Islamic finance. The heading is changed in Islamic Bank balance sheet. Here, conventional banks use advances, but
and here Islamic banks use Islamic financing. Actually, because this is for financing, this head shows the financing to clients. So that is why they name it in this way. And these are assets through from the deposits. So these are the deposits of Islamic banks, and from these deposits, these assets are generated. So let's check that what is the explanation of these three heads 9, 10, 11 in their notes. Look at here. 9 ड्यू फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो दूसरे इदारों को इन्होंने पैसे दिए हैं और उनसे इनको जो वसूल होने वाले हैं वो किस मद में है, आया वो सूदी कॉन्ट्रैक्ट के तहत है या किस। लुक एट हियर, विद शेड्यूल्ड बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ और अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका पैसा रखा हुआ है, और उन्होंने कहा कि ये बै मुअज्जल के साथ है। तो इसका मतलब हुआ कि ये इस्लामिक मोड के थ्रू उनके साथ पैसा रखा हुआ है जीओपी इजारा सुकूक के तहत। अच्छा, फिर है कि जी मुशारका, वकाला, कमोडिटी मुराबाहा, ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनके तहत इन्होंने दूसरे इदारों को पैसा दे रखा है, और ये कॉन्ट्रैक्ट मुशारका, वकाला, कमोडिटी मुराबाहा, ये तीनों के तीनों कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस्लामी कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक चीज याद रख लें कि कमोडिटी मुराबा पहले जो होता था उसके अंदर शरिया रूल्स की वायलेशन होती थी, और जब मीजान बैंक ने अब दोबारा शुरू किया है तो अब वो कहते हैं कि हम इस शरिया रूल्स की वायलेशन नहीं करते, क्योंकि हम जो है अब वो पोजीशन लेते हैं, पहले चीज की पोजीशन नहीं ली जाती थी। कमोडिटी मुराबे की एक्सप्लेनेशन के लिए फर्दर आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट। Look at here, as we checked in in the conventional banks, that these two heads, federal government securities, shares. So let's check what are the federal governments and shares. जिस तरह सूदी बैंक सूदी फेडरल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था, सूदी बॉन्ड्स के अंदर, और इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रहा था, जबकि वो हराम शेयर्स हैं। चल यहाँ पे भी देखते हैं कि इस्लामिक बैंक कैसे करता है। So look at here, फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इस्लामिक बैंक जीओपी इजारा सुकूक परचेज कर रहा है, और सिर्फ जायज सुकूक परचेज कर रहा है जिसके अंदर सूद नहीं है। इस्लामिक बैंक सिर्फ उनके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। इसी तरह शेयर्स में देख लें तो ये सारी कंपनीज वो हैं जिनके बिजनेस हलाल हैं, जायज हैं, और इसके अंदर कोई भी एक कंपनी ऐसी नहीं है जो शरिया के रूल्स के इस अंदाज में वायलेशन कर रही हो कि उनकी इनकम हराम हो। तो ये हराम इनकम नहीं है, तो उसके लिए ये के एम आई इंडेक्स को फॉलो करते हैं। मेरे इसी चैनल पर के एम आई इंडेक्स की एक क्लिप मौजूद है जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि के एम आई इंडेक्स कैसे काम करता है। तो ये इस्लामिक बैंक इस अंदाज में ये इन्वेस्टमेंट करता है। अब जरा देखते हैं कि वो फाइनेंस कैसे करता है क्लाइंट्स को। लुक एट हियर, इस्लामिक बैंक फाइनेंसिंग, थर्ड हेड था। अब इस्लामिक बैंक अपने क्लाइंट्स को जो फाइनेंस करता है उसके मोड्स देखें। मुराबा फाइनेंस है, उसके नीचे ये मुराबा इन्वेंट्री, इस्लामिक फाइनेंस अंडर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी मुराबा के तहत किस तरह ये करता है। फिर रनिंग मुशारका फाइनेंस है, इस्तिस्ना फाइनेंसिंग, तिजारा फाइनेंसिंग, मुसावमा फाइनेंसिंग, सलम फाइनेंसिंग, ये सारी की सारी ये इस्लामिक मोड्स के थ्रू फाइनेंसिंग हो रही है, जहां पर इस्लामी उसूलों के तहत मुनाफा की तकसीम की जाती है, और इस्लामी उसूलों पर मुनाफा कमाया जाता है, और ये हलाल बिजनेस के जरिए ही कमाया जाता है। तो इस्लामी बैंक्स सूदी बैंकों की तरह ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, और जहां पे भी हो सिर्फ बस प्रॉफिट कमाओ, हलाल हो हराम हो ये ना देखा जाए, ऐसा नहीं है। इस्लामी बैंक बाकायदा मुनाफा कमाते हैं, ठीक है। दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस, दे आर नॉट यू सपोज टू दैट दे आर सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस, और आप ये कहें कि वहाँ सदकात और खैरात मिलती होगी। ये कारोबारी इदारे हैं, और इस्लाम भी ये चाहता है कि कारोबारी इदारे इस्लाम के उसूलों पर काम करें। ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ सदकात और खैरात पे काम करें, दो हम चाहते हैं कि ये इस्लामिक बैंकिंग भी जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए कोई अपना रोल प्ले करे, और मकासद शरिया की तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए इस निज़ाम को। तो इस क्लिप के जो मैं कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूंगा कि after looking these differences between conventional bank and Islamic bank, so how one can say that there is no difference between these two systems? तो अगर कोई कहेगा तो फिर हम यही कह सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक बैंक को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन अदरवाइज उनके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है इस्लामिक बैंक
और कन्वेंशनल बैंक के दरमियान फर्क को तस्लीम न करने का कोई उनके पास ठोस सबूत मौजूद नहीं है। अब देख लें, हमने उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये एस्टेब्लिश कर दिया कि देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिस्टम्स। इस्लामिक बैंक है तो इन मोड्स के तहत वो बाकायदा रिस्क उठाता है। कन्वेंशनल बैंक के अंदर कहीं पर रिस्क नाम की कोई चीज नहीं है, गारंटीड प्रॉफिट है। यहाँ पर रिस्क शेयरिंग भी है, रिस्क ट्रांसफरिंग भी है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू systems.